publishing, whether they are from restaurants. Kafi log mile. I mean, it was a full house for 3 days for me. Back to back, I think I met about 24 different people. Wonderful. So, and then it was nice, but so much so for New York. Now we are back in the Bay Area. We're going to be here for at least another 2 weeks or 2 months. So we should continue with with our show. हमने last week जो topic बात की थी, we will continue with that. How's that? Gee, definitely. So, as I remember correctly, we were talking about sun and all the important aspects, why it is so important in our horoscope. So I'm not going to repeat जो हमने पूरा 1 घंटा बात की थी, but we're going to talk about what the sun is. Just refresh yourself. So sun is a fiery planet. ये कारक है. It is the karak of the first house and karak of the ninth house. First house is you. Ninth house is your father and guru. He is the karak of health, father, power, authority, fame, royalty, medicine, eyes, government, worship, blood circulation. Remember we said the sun impacts your right eye, your heart, and your blood and your soul. That's Right. why it is such an important planet. जब कारक अपने घर में बैठता है, वहां problem देता है. When you have a strong sun, you can be in one of these professions: an entrepreneur, economic occupation, royal class, government officer, magistrate, ruler, administrator, forest officer, jeweler, basically everything related to gold, jewels, rubies, the sun. Sun jo planet hai, he has only 3 friends: Moon, Mars, and Jupiter. Because Moon is the queen, Sun is king. Mars is his son, and Jupiter is his advisor. He does not get along with Saturn and Venus. Saturn is the general population, while Venus happens to be the princess. The king, Purane Zamane mein, always preferred his son over the daughter. That's an old thing, but that's what astrology is based on. And he's neutral towards Mercury. Sun rules the sign of Leo. जब sun Leo sign में 0 और 20 degrees के बीच में आता है, it becomes very strong. It's called Mool Trikon. When sun is in 10 degrees of Aries, exactly, he is considered to be in exaltation. When he is about 7 to 13 degrees of Libra, he's very weak. He has no strength left. That's considered debilitated, dangerous for that particular chart. The sun is a male. He has directional strength, मतलब बहुत strong हो जाता है east में. Okay. The lucky gemstone for those people who like gemstones, believe in gemstone remedies, is ruby. Lucky colors for sun is orange, saffron, and light red. हम ये भी कहते हैं कि अगर आपका sun weak है, then you should wear a ruby. Also, if you want to donate something, astrology books say donate wheat, copper, red cloth, sandalwood, and saffron. If your sun is weak, eat a little bit of saffron, 3 to 4 threads every morning. It's supposed to be good for you. I did tell you, Vedika, that the ideal sun personality will be short, square-shaped body. His eyes will be hazel color, and he will have very less hair on his head. Yaad hai aapko? Yes, I remember. That is the ideal definition of sun. The sun controls the bones, the heart. He controls the right eye. अगर आपका sun में problems है, then you will get heart problems, bone problems, fractures primarily, migraines. Sun is too strong, you get fever all the time, jaundice. Sun causes cuts and burns in the body. Sun also causes lots of skin diseases, leprosy. जिनको lepers जो होते हैं, unfortunately, when we look at their chart, it's the sun that causes that. Sun is responsible for stomach ulcers, headache, diarrhea. So we've done all this. अभी इसके आगे हम जाएंगे. We'll try to understand कि sun कहाँ strong होता है, कहाँ weak होता है, कौन सी zodiac sign में कैसे होता है, which house the sun has what properties. But before that, we'll talk about medical wise how the sun impacts you if it is placed in a certain nakshatra. So when the moon goes around the earth, it's in a 360 degree, we divide that into 26 segments, 27. Each segment is called a nakshatra. Every nakshatra has one lord, but there are 7 planets excluding Rahu Ketu, right? The sun moon bhi nikal do, so there are 5.
So these nakshatras are owned by one or more planet, right? Okay. अगर सन के नक्षत्र में आ जाता है, you will almost always be having fever in your body and irritable personality होती है, गुस्सा आता है लोगों को, because sun is in sun's nakshatra. Heat. This is very Yeah. important because when people come to us and say हमारी we have health issues, we like, what is your health issue? Let's say they say we are a pessimistic person, we're highly temperamental. Then the first thing we do is we see sun has to be in the nakshatra of moon. That is a good indication that yes, आपने हमें right time दिया है and we are on the right path. अगर sun Mars के नक्षत्र में आता है, then you are typically anemic, you have low blood pressure, you feel giddy. अगर sun Mercury की नक्षत्र में आता है, it gives migraine problems. So people who are looking for, they go to a doctor, they can't find a solution. 99% sun Mercury के नक्षत्र में है. If sun is sitting with Jupiter, this Jupiter is the planet of your liver. Sun is going to hurt Jupiter. Liver jaundice हो जाता है, gallbladder problem, diseases. If sun is with Saturn, it causes low blood pressure, not high, but low blood pressure. With Venus, it can cause cysts in your body. And finally, sun with Rahu, mental deficiency, forgetfulness, dullness, not very smart people. People you have to keep repeating the same thing over and over again. Sun and Rahu. And Sun Ketu, not a good combination. By far the worst combination. Low blood pressure. Now, Sun is a very powerful planet. Remember, it's your soul. Rahu Yeah, cannot so go. I, Yes. I really have a question on that. But before that, I would like to remind all the listeners that the Saket Bhatia Astrology Show is on, and this is the time where you can call us. We are opening the studio lines 510-770-1550. Do call us. Dr. Saket Bhatia is live with us. And if you have any astrology or numerology related question, be ready with your date, time, and place of birth. So let me start with my question. As you Did you call in started, or no? yeah, no, I have the privilege. I don't have to call That's in. good. I like that. Privilege. Anji. Yes. So the thing is that last week भी हमने बात किया था that sun is you. So but अभी जो आप बात बता रहे हैं that all is problem. Like sun का अगर डिग्री ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है. तो how is that possible? जुपिटर के साथ है तो भी प्रॉब्लम है, सैटर्न के साथ है तो भी प्रॉब्लम है. So then is sun like all problems? कहीं भी है, कैसे भी बैठा है, it's troubling us? तो माइक, मेरा क्वेश्चन आपके लिए है, प्रॉब्लम क्या है? व्हाट प्रॉब्लम हैव आई सेड? पहली बात तो आई डिडंट से सन जुपिटर के साथ बैठा है, आई सेड सन जुपिटर के नक्षत्र में है. अच्छा, देयर इज अ जुपिटर के वेरी बिग नक्षत्र. डिफरेंस. Yeah, right. देखिए, वी आर ऑल ह्यूमंस, all our bodies will have one or the other problem. Yes. Nobody is going to be perfect. Most people I meet in this Bay Area have either high blood pressure or they have digestion, right? And if you look at their charts, high blood pressure is caused by like Mars sitting with the sun, Mm-hmm. and irritability or whatever, high temperamental pessimism, moodiness is caused by sun and the nakshatra of moon. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ रहा है. But if your sun is absolutely ideal, perfect, if your ascendant is at 15 degrees, sun is at 15 degrees, this is a perfect chart, you will be a respected leader. I'm not saying, this is not a show in which I keep talking about money, money, money. This is a show in which I talk about spirituality, luck, guidance. My goal is not here to say आप कितने पैसे बनाओगे, कितने बना सकते हो. My goal is to make sure you have a happy, content life. बहुत फर्क होता है. Sun अगर perfect हो, you will be a very content person. You will lead by example. You will tell other people what good you have done so they can follow you better. अगर आपका sun weak है, जितने आप कर सकते थे, ये नहीं कर सकोगे. Okay. आपकी ख्वाहिश रहेगी. You'll have the ability, you will have the desire, but something or the other will come in between to stop you from doing it. Right. On the other hand, if your sun is overly strong, you can be like an Aurangzeb. You will essentially be very powerful, but for what good? Yeah. All humanity is going to hate you for years to come. So sun jo hota hai, it can go on either side like any other planet. Mm-hmm. At the end of the day, this is you.
इट इज योर सोल. यू डिसाइड क्या कर्म आपने करने हैं, अच्छे के बुरे, और आगे जाके जो जनरेशन है वो आपको याद करेगी कि नहीं करेगी. इट्स अप टू यू. Definitely. That totally makes sense. Listeners, see, like this, आप भी question पूछ सकते हैं. And this was not a demo. I actually am very curious about all the great topics we pick on this show. If you have any question regarding what we are discussing right now, or if you have any astrological related question, चाहे अपने बारे में, किसी loved one के बारे में, ज़रूर कॉल कीजिए 5107701550. और आप अगर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड भी आपका कोई क्वेश्चन है तो भी कॉल कर सकते हैं. डॉक्टर साकेत भाटिया इज एन एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी एज वेल, एंड यू कैन गेट द सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम्स राइट हियर. और अगर आप मिलना चाहते हैं शो के दौरान नहीं और शो के बाद, यू हैव एनी पर्सनल प्रॉब्लम जो आप डिस्कस करना चाहते हैं अबाउट योर हॉरोस्कोप, डू कॉन्टैक्ट हिम डायरेक्टली. आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 408-639-5300 पे. बट फॉर ऑल द क्विक क्वेश्चंस, studio lines are open. Do call us 510-770-1550. डॉक्टर साकेत भाटिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उनकी वेबसाइट से saketbhatia.com पे. Studio lines are open. Once again, reminder, I'm already seeing blinking lights, but you also have any question, don't hold on. 510-770-1550 पे कॉल कीजिए. We have a caller. Let's take the call. Sure. Hello, you're on air with Dr. Saket Bhatia. नमस्ते जी, मेरा नाम जोकर. Hello, how are you? हेलो जी, आप कैसे हो? थैंक यू जी, थैंक्स फॉर I'm टेकिंग fine. माय कॉल. माय क्वेश्चन इज, माय वाइफ स्टॉप टॉकिंग 2 weeks to me. Is this a good sign or bad sign? Your wife stopped talking to you. Yes sir. Is this a good sign or a bad sign? Yes sir. Without reading astrology, without reading your chart, हम कह सकते हैं it's not a good sign. देखिए, because क्या होता है in astrology, your wife is the Yeah. 7th house. The 7th house is what you desire in a partner. These are qualities you don't appreciate in yourself, but you appreciate in the other person. हम इसे टीम वर्क कहते हैं. In a team, when two people are together, but one doesn't partner with the other, one doesn't talk to the other, this is not considered to be healthy. My only Okay. solution is जितनी fast life में problems fix कर सकते हो कीजिए. The best way to fix a problem is open communication. Yes, गुस्सा आता है. Yes, frustration होता है. Sometimes somebody doesn't understand your point of view. Maybe you're not understanding the other person's point of view. Sit back, learn, talk, understand, appreciate, fix it. You should be able to fix your problem yourself. I wish you well, but jaldi kijiye, because as time goes by, you get used to it. And that's what increases the difference. Right? Okay जी. So it's not a good sign. My opinion, definitely not a good sign. Thank you, doctor. So where can I meet you with my astrology, my all those things? So Where can I come? you can call Dr. Saket Bhatia directly. His number is 408-639-5300. Once again, उनका number है 408-639-5300, or you can look for the website saketbhatia.com. So if you also have any questions, people who are listening to us right now, you can give us a call 510-770-1550. But this last caller and the question, people might say that it is a good sign on a lighter note. Yeah, but lighter note makes sense only for short period of time. That's Maybe you get a break, but long term, this is not good. 2 weeks is too long. Of course, yes, it's definitely not a good sign. If you're staying under the same roof, 2 hours could be too long. Yes, And then we absolutely. don't know. Maybe if you have family, then that puts more pressure on everybody else. If you have kids, it becomes a bigger problem. You know, Sadhguru ji, Definitely. उन्होंने जी. recently एक video उनका देखा था मैंने, and he articulated it very well. He said, no matter how much you fight, no matter how much you argue, no matter how stressed you are, no matter how depressed you are, अपने घर में सिर्फ smile लाइए. Because young kids need to only see smiling faces. At some point of time in their life, they're going to be exposed to this whole world, which is full of grief, which is full of frustration, and not so good people. But at home, we can make sure that they are at least happy. So घर पे खुश रहिए. That's what I want to tell everybody.
That's a wonderful thought, and I really hope that everybody follows that. So, listeners, Dr. Saket Bhatia is right here with all the answers. All you have to do is dial 510-770-1550 to get your questions answered, be it an astrology related question or numerology. He has the solution for all your problems. 510-770-1550 is the number, or you can call him directly 408-639-5300. We have another caller. Sure. Hello, you're on air with Dr. Saket Bhatia. Hello, Dr. Bhatia. I have a question for my daughter. Sure. She is 9th May 1982 born 9th May 1982 born. Okay. at 0045 in Chandigarh. 0045. So late night, early morning, huh? हाँ जी, yes. आपको उस And रात को Sunday नींद तो was आई the नहीं? date. हाँ जी. And it's like she has bad health. She doesn't have a house and she is not getting married. So a lot of things. Just want to know what her future is like. देखिए आपने 3 क्वेश्चन पूछे हैं. She is not getting married, she has bad health, and she does not have a house. These 3 questions, right? Yes. आपकी डॉटर की चार्ट है again. It is May 9th, 1982 at 0045 in Chandigarh. Yes. वो यहाँ है कि वो इंडिया में है? यहाँ है. ओके. आपकी डॉटर की अगर नहीं, द रीजन हमने पूछा कि घर के लिए हमें 4th हाउस पढ़ना पड़ता है. आपकी डॉटर की जो चार्ट बनी है, शी इज अ कैप्रिकॉर्न असेंडेंट. कैप्रिकॉर्न का रूलर होता है सैटर्न, जो 9th हाउस में बैठ गया. हमने 3-4 शो पहले कहा था कि जब सैटर्न रेट्रोग्रेड 9th हाउस में बैठता है, इट रिप्रेजेंट्स डिले, नॉट डिनायल. डिले इन क्रिएटिविटी, डिले इन प्रॉपर्टी, डिले इन चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन हम समझ गए बिकॉज सैटर्न वहां है. द डिले दैट इज इन क्रिएटिविटी वो भी इस 9th हाउस की वजह से है. और जो दूसरी डिले है जो घर का है वो भी सैटर्न, बिकॉज सैटर्न जो है रेट्रोग्रेड है. शनि जो होता है वो प्रॉपर्टी दिखाता है, मालिक होता है. एज फार एज हेल्थ गोज, अभी फिलहाल उसका चल रही है, वो राहु बैठा है उनके हेल्थ में और केतु की दशा चल रही है. केतु शनि की दशा अच्छी नहीं होती, बिकॉज केतु विल एक्ट लाइक मार्स. ये दशा अच्छी नहीं है. इसके बाद जो नेक्स्ट दशा आएगी केतु मर्क्यूरी की, जो दिसंबर में है, वो भी इतनी अच्छी नहीं है इनके लिए. द नेक्स्ट दशा 2025 नवंबर में जो आती है वो अच्छी है. सो बिटवीन नाउ एंड 2025 नवंबर आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि केतु थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है इस दशा में. आपकी डॉटर की एग्जैक्ट एज क्या है? Exact what? शी इज 40, राइट? Yes, 82 born. 82 born, 40 है. नहीं, बिकॉज शनि और मंगल एक ही घर में बैठे हैं. तो ये जब साथ में आपके वीनस को देख रहे हैं एग्जॉल्टेड, थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं. दिस इज चार्ट ठीक है, सन बैठा है ठीक, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है. जुपिटर रेट्रोग्रेड सिंपली मींस डिले इन मैरिज फॉर हर ग्रेट एनिमी. अगर आपको कुछ चाहिए आप आ जाए हमारे पास, वी कैन ऑलवेज टॉक टू यू, वी कैन एक्सप्लेन यू. बिकॉज आपकी डॉटर की चार्ट में द बेस्ट थिंग इज एग्जॉल्टेड सन. जो इनका सन एग्जॉल्ट हो गया 4th हाउस में, दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट. ओके. Would you just repeat it? What is you said is the good thing? सन एग्जॉल्टेड है 4th घर में. अच्छा, उसका क्या मतलब होता है? सन एग्जॉल्टेड बड़ा मुश्किल होगा एक्सप्लेन करना रेडियो पे, बट डायरेक्शन लाइफ में अच्छी है उसकी. फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्फिडेंस माइट बी स्लाइटली वीक, बट ओवरऑल कैन बी गुड. आप हेल्थ पे फोकस कीजिए. सैटर्न इनकी हेल्थ पे एस्पेक्ट कर रहा है. शनि, राहु भी है उस घर पे, और दशा चल रही है केतु की जो उस घर को देख रहा है. तो वो फिक्स कीजिए पहले, उसके बाद लाइफ बेटर होगी नवंबर 2025 के बाद. ओके. Okay, thank you so much. Thanks. थैंक यू. Thank you so much for your call. Listeners, if you have any question, Dr. Saket Bhatia has around 30 more minutes in the show. 510-770-1550 पे call कर सकते हैं. Dr. Saket Bhatia, who has a PhD in the subject of astrology and who is also a professional numerologist, has over 25 years of experience and
many satisfied clients. He can also guide you in life if you are disoriented, if you have any question, any concerns, any confusions which you're going through and you want some clarity in life, then the person for you is Dr. Saket Bhatia. Do call him directly if you want to take an appointment. 408-639-5300. Website है उनकी the the show is the Saket Bhatia Astrology Show. Website है उनकी saketbhatia.com और email कर सकते हैं if you have any particular question at info@saketbhatia.com. जी, let's get back to Sun. Yes, let's get back to Sun. So before this show, I barely spoke to you for 30 seconds. And कहा था कि this started off as a astrology and numerology show, and then we started adding a combination of motivational speaking in this, giving people confidence in their life. And now we're adding a third element in this show, which is a spirituality element. देखो spirituality बहुत important होता है. Astrology is built on spirituality. Life is built on spirituality. There is a big difference between spirituality and religion. Religions वो होता है जो मंदिर जाते हैं, जो पूजा करते हैं, जो गॉड में बिलीव करते हैं. Spiritual वो होते हैं that believe in a higher power, that believes that we are all here for a purpose in life. They also believe in God, but they don't necessarily go to the temple. They don't necessarily do follow the traditions, but उनको फिर भी ये faith है कि हाँ, there is something out there that is watching us. There is something that is planning good things for us in life also. हमारा purpose क्या है? तो ये show is going to now encompass astrology, numerology, लाइफ कोचिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड स्पिरिचुअलिटी. तो थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे हर टॉपिक का, राइट? That is much needed. That is really much needed content which everybody needs to hear. And आप थोड़ा बहुत तो you have been doing it since the beginning. आपका जो थोड़ा motivation वाला part, bringing some positivity, that was consistent since the first episode, I remember. So yes, I think that is really what we need right now. We have couple of callers. Can we take two calls? Sure. Hello, you're on air with Dr. Saket Bhatia. हाँ जी, मेरी वाइफ है. माय वाइफ, हर नेम इज सुरेंद्रा. ओके. एंड शी वाज born on 26th of November 1950 in बसी पठाना, पटियाला. टाइम क्या था उनका? टाइम था जी 3:30 PM. 3:30 PM. So 15:30. ओके, इन पटियाला. बसी पठाना है, वो छोटा सा शहर है, पिंड है, क्या कहते हैं. तो जो भी है, खाना अच्छा है वहाँ का. खाना अच्छा है. फूड इज गुड. तो द प्रॉब्लम इज, वो कहती है कि मैं नेम के ऊपर से सुरेंद्रा के से तो कुंभ देखती हूँ, और जो बर्थ का अगर चार्ट देखती है तो वो टर्स आ जाती है. तो किस में देखना चाहिए? ठीक ठीक फिर से बताइए. अगर बर्थ देखते हैं तो टॉरस आ जाता है. हाँ, बर्थडे पर टॉरस नहीं आ गया. 26 नवंबर 1950. 26 नवंबर 1950 अगर हमने 3:30 बजे की चार्ट बनाई तो असेंडेंट आता है एरीज. लेकिन एक रूल है एस्ट्रोलॉजी. एरीज नहीं, सुनिए, एरीज. लेकिन एस्ट्रोलॉजी में एक सिंपल सा रूल है कि फीमेल की चार्ट अगर मून असेंडेंट से स्ट्रॉन्गर है तो मून असेंडेंट से पढ़ी जानी चाहिए. आपकी वाइफ मून टॉरस में है इन द सेकंड हाउस, तो वी कैन ईदर स्टडी हर चार्ट फ्रॉम असेंडेंट, लेकिन मून जितना स्ट्रांग है हम रोटेट कर सकते हैं. रीजन है आपकी वाइफ की चार्ट में हाउस नंबर 1, 4, 7, 10 और 5 खाली हैं. दैट मेक्स द चार्ट वेरी वीक. लेकिन अगर हम मून में रोटेट कर दे, नाउ ऑल ऑफ अ सडन वी हैव हाउस नंबर 1, 7 एंड 10 में प्लैनेट्स घुस गए, जिसमें से मून इज वेरी स्ट्रांग इन दिस चार्ट. क्योंकि मून इज नॉट ओनली ऑपोजिट टू द सन, पूरा मून फुल मून है, बट जुपिटर भी स्ट्रांग है इस कुंडली में. तो आपके क्वेश्चन क्या है फिर? क्वेश्चन ये है कि वो हमेशा घबराई रहती है, नर्वस रहती है. ये हो गया, वो हो गया. देखो करो बात, जरा करो बात. नमस्कार जी. नमस्ते. नर्वस बहुत ज्यादा रहती हूँ.
थोड़ी सी बात सुन लूं तब नर्वस हो जाऊंगी। रात को नींद नहीं आती, कई बार ड्राइविंग में मैंने एंजाइटी, डर लगता है। चलती चलती मैं गड्डी बहुत सोनी चलाती थी, अब डर लगता है मैं गिर जाऊंगी, गड्डी से बाहर निकल चली जाऊंगी, ऐसी घबराहट देखिए हो जाती है। फिर 6 आपका मंथ ठीक रहती हूँ, ड्राइविंग ठीक चलती है, 6 मंथ के बाद फिर मैं डाउन हो जाती हूँ। ये जो है, जो आपका जो फ्लक्चुएशन है, इसका एक एक रूल है। मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ, आपका मून बहुत स्ट्रांग है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आपका जो गली का मंडी है, आप पैदा हुए थे, यू वर बोर्न ऑन, आप संडे पैदा हुए थे। हाँ जी। आपका सन जो है वो ग्रेट फ्रेंड साइन में है, बट आई डोंट कंसिडर सन टू बी स्ट्रांग, और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है उसमें। अच्छा जी। तो गली का मंडी आप पे असर तो करेगा। एंड गली का मंडी बैठा है 12th हाउस में, जिसका मालिक है मार्स, जो जुपिटर के साथ बैठा है। तो जब भी इनकी दशा आएगी आपको थोड़ा स्ट्रेस होगा। देखिए आपकी कुंडली में जो मून है वो टॉरस में तो बैठा है, लेकिन एग्जॉल्टेड नहीं है, क्योंकि उसकी डिग्री कम है। ओके। और क्या आपके करना मून पे चाहिए? डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है शनि और केतु का। ओके। ये एक माइनर सी इशू है, ये लाइफ टाइम रहेगी। लेकिन वीनस का भी असर है आपके मून पे, सेटिस्फैक्शन भी है आप में, इंटेलिजेंस भी है। आई मीन इसका फिक्स क्या है? इसका फिक्स ये है, या तो आप अपने मून को स्ट्रांग कीजिए। ओके, बिकॉज कैसे करिए? अपने मून को स्ट्रांग करने के लिए काफी तरीके होते हैं। इस कुंडली में मून को स्ट्रांग किया जा सकता है, थर्ड लॉर्ड है, इट्स नॉट एडवाइजेबल, कर सकते हैं। जुपिटर भी कर सकते हैं स्ट्रांग। जुपिटर एक्चुअली जुपिटर स्ट्रांग कीजिए बेटर देन मून, क्योंकि जुपिटर गेन्स का मालिक है। अच्छा जी। जुपिटर के क्या उपाय है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कुछ बता दो। हम कोई कहते हैं पूजा जुपिटर या के कुछ? लिए एवरी थर्सडे यू कैन गो एंड डोनेट येलो बुक्स टू चिल्ड्रन। ऑर्फनेज में जाके कुछ किताबें डोनेट कर दो, ऑर्फनेज में पैसे डोनेट कर दो। मून के लिए पर्ल्स हैं। अगर ज्यादा हाँ। इंफॉर्मेशन चाहिए हमें कॉल कीजिए, वी कैन ऑलवेज टॉक, वी कैन गिव यू ओके। मोर गाइडेंस। ओवरऑल वुमेन के लिए चार्ट अच्छी है। मून वीनस, मून ठीक जुपिटर, मून अंदर बैठे हैं, सिर्फ एक शनि है। 5वें घर में है। हाँ। वो अगर फिक्स हो जाए ओके। तो यू बी फाइन। या चलो ठीक है, फिर मैं कुछ कॉल नहीं है करूंगी इतना। आपको। ओके, जी थैंक यू। आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं डॉक्टर साकेत भाटिया को 408-639-5300। डॉक्टर भाटिया का डायरेक्ट नंबर है, वंस अगेन 408-639-5300। और या फिर आप उनकी वेबसाइट, उनके नाम से इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, saketbhatia.com उनकी वेबसाइट है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। वी हैव अनदर कॉलर वेटिंग। Yeah, I have a question, suggestion. जी लास्ट टाइम सबने कहा था कि मुझे ईमेल भी आते कि you're taking too much time for the callers. और मे बी इससे क्या होता है? यू केयर टू मच। नहीं, दैट्स वो बात नहीं, गुड। we have to at least answer right ना. जी जी Even if I डेफिनेटली। answer one caller यस as opposed to 10, it is better at least answer तो right मिले rather than एब्सोल्युटली rapid fire. This is not a rapid fire show. Absolutely, absolutely. And listeners, with that reminder, if you also have any question and if you would like to get it answered, एकदम आराम से जरूर कॉल कीजिए हमें. Dr. Saket Bhatia is live here and the Saket Bhatia Astrology Show is on. You can call us with your astrology or numerology related questions. 510-770-1550. We have 20 more minutes in this show. Let's take another caller. Okay. Hello. Ji, you're on air with Dr. Saket Bhatia. हाँ, क्वेश्चन था, मुझे जॉब के बारे में पूछना था अपनी। Okay. डेट ऑफ आपका बर्थ नाम है क्या है? जनवरी, डेट ऑफ बर्थ है जनवरी 16 1974, January 16th, 1974. Okay. 3:15 AM। 3:15 a.m. Okay. तो जॉब कब तक मिल जाएगी ये पूछना था अभी। आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? जनवरी 16 1974, रोहतक, इंडिया। प्लेस रोहतक। हाँ जी। रोहतक, इंडिया। कहाँ पर है रोहतक एग्जैक्टली? हरियाणा, हरियाणा। रोहतक। आई ऑलवेज यूज वेदिका टू टेल मी दिस स्टफ। वेदिका इज गुड एट जियोग्राफी। थैंक यू वेदिका। You're welcome. आधा जॉब तुम्हारा वेदिका कर लेती है।
ओके, चलो मिल गया। तो आपका क्वेश्चन क्या, जॉब कब मिलेगी? हाँ मतलब जो मिल नहीं पा रही है, ट्राई कर रहा हूँ काफी टाइम से, बट रीच नहीं कर पा रहा हूँ डेस्टिनेशन पे जॉब की, अगली जॉब की। क्या करते हो आप? सॉफ्टवेयर में हूँ। सॉफ्टवेयर में हो। देखिए, जनवरी 16 1974 एट 3:15 इन द मॉर्निंग, रोहतक हरियाणा, ये चार्ट जो जी। बनती है ये सैजिटेरियस असेंडेंट की है। लॉर्ड बैठ गया वेल्थ एंड वैल्यूज में, साथ में बैठा है सन, मर्क्यूरी, वीनस। तो सन, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर बैठ गए हैं सेकंड हाउस में, विच इज अ गुड थिंग। हाउएवर, आपका जुपिटर जो रूलिंग लॉर्ड है वो डिबिलिटेटेड है। जब प्लैनेट डिबिलिटेटेड होता है, ही गिव्स हार्ड टाइम टू द हाउस ही सिट्स इन एंड द हाउस द प्लैनेट सीज विथ। अनफॉर्चुनेटली वो मर्क्यूरी के साथ बैठा है, जो आपका करियर बिजनेस पार्टनरशिप का लॉर्ड है। दशा चल रही है मर्क्यूरी मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी मर्क्यूरी दशा है 1 2 3 4। जुपिटर अभी ट्रांजिट में सेकंड हाउस आपके सिक्स्थ हाउस में जाएगा, और उसकी जो पांचवी एस्पेक्ट है वो केन पे गिरेगी। यू हैव टू चॉइसेस। या तो आप 4 महीने वेट कीजिए कि जुपिटर ट्रांजिट में एस्पेक्ट करेगा आपके करियर के घर पे मर्क्यूरी मर्क्यूरी दशा, यू विल गेट अ गुड जॉब। अनडाउटेडली यू विल गेट अ गुड जॉब। वो दशा खत्म नहीं होती 2026 तक। बिटवीन ओके। जुलाई 2024 एंड जुलाई 2025 you will get a job, but the problem is your Jupiter is debilitated. उसे फिक्स कीजिए। debilitated Jupiter will cause problems in life, लक ले जाता है वो फिक्स कीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपके सन की स्ट्रेंथ शतबाला 0.54 है, जुपिटर 0.68 है, और मर्क्यूरी 0.74 है, राइट। अगर हम जुपिटर को आपकी नवम चार्ट में देखें, मार्स के साथ बैठा है लियो में, विच इज गुड। योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इन लाइफ हैज ऑलवेज बीन फिक्स जुपिटर, उसे फिक्स कीजिए, योर लाइफ विल बिकम बेटर। दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू। कुछ थोड़ा जॉब बहुत कुछ कर बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं? यहाँ पर बढ़ना मुश्किल है, बिकॉज इस कुंडली ओके। के लिए जुपिटर असेंडेंट लॉर्ड है। आप यू कॉल अस, वी कैन डिस्कस, वी कैन हेल्प यू। आपका जो गज केसरी योग है वो स्पॉटलेस तो नहीं है, बिकॉज मून इज लॉर्ड ऑफ एथ, लेकिन मून जब एथ लॉर्ड होता है वो सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए खराब होता है। शनि बैठा है आपके शादी के घर में, सो स्टेबल मैरिज होगी, बट थोड़ा डिले होगा इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। यू शुड एक्चुअली वर्क योरसेल्फ, यू शुड नॉट वर्क फॉर समवन, दैट्स माय सजेशन। बाकी आपकी चॉइस है, खुद का ओके। काम करो, बेटर है। देयर आर वेज टू डू दिस। मार्स इज वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग, और इस कुंडली में मार्स जो है वो अच्छा प्लेनेट है, लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ, अपने ही घर में बैठा है। आप कॉल कीजिए, वी कैन हेल्प यू। इन द मीन टाइम, ठीक है। either fix Jupiter right now, yeah, wait ठीक for है। 5 months to get the job. Okay. ठीक है, थैंक यू। Thank you so much for your call, listeners. You are listening to Dr. Saket Bhatia, and as every week he picks up some topic which you might find relevant to your life or any phase in your life. And there could be any question in your mind that, yes, this is happening with me, or yes, I am also feeling this thing, and you would like to discuss more. That's when you call him 408-639-5300. You can also visit his website for all information regarding him, saketbhatia.com. और या फिर ईमेल कीजिए info@zakitbhatia.com. So we have 15 more minutes in the show. Still, if somebody is holding on with the question, 510-770-1550 is the number. जी. So usually planets like Jupiter and Mars, जब सन को देखते हैं, they boost the sun, right? They help the sun. But अगर जुपिटर आपका थोड़ा वीक है और सन को एस्पेक्ट करता है, then it causes high blood pressure. और शनि जब भी सन को देखता है, it causes low blood pressure. I know this is kind of strange, but this is how it works. अगर मार्स आपके सन को एस्पेक्ट कर रहा है एंड मार्स इज ओवरली स्ट्रांग इन योर कुंडली, देन इट कैन कॉज थिंग्स लाइक कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक्स, माइग्रेन्स, ये कॉमन होता है। और अगर जैसे आपने पूछा था, इफ माय सन इज वेरी स्ट्रांग और वेरी वीक, एक होता है योर सन कुड बी स्ट्रांग, योर सन कुड बी वीक, बट अगर उसको केतु, राहु या सैटर्न या Saturn. कुछ और प्लैनेट्स, देखिए इवन प्लैनेट लाइक वीनस कैन हर्ट द सन, Hmm. because Venus is an enemy of the sun. Yeah. Whenever Venus looks at sun,
वो उसकी स्ट्रेंथ कम करता है. जितने जितने एनिमीज सन को देखेंगे वो उसकी स्ट्रेंथ कम करेंगे. सो इफ सन इज अफ्लिक्टेड, इट गिव्स यू स्टमक प्रॉब्लम्स ऑलवेज. Stomach ailments, gallbladder. Just yesterday, I had somebody with a gallbladder in my office, and the first thing was look, and he said, "Yes, dikh raha hai, dasha hai." And then the question was, "When should I do surgery?" And my answer is, ASAP. Ask your doctor. ऐसी चीजें you cannot delay. You should. Not feeling good? No. If astrologer said no, do it right way through the doctor. So, we time थोड़ा short है. Why don't we discuss the planet sun in different signs? अगर different घरों में हो गया तो वो problem हो जाएगा, वो खत्म नहीं होगा. Sure. Let's do it in different signs. So, if the sun is in Aries is a fire sign. जब sun fire planet fire sign में आता है, it makes you very assertive, active, impatient. You want to do things. You are intelligent. But then you're also egoistic. You become famous. You're fond of traveling. You're fond of people. Marked personality होती है आपकी. तो जितने लोग जिनकी sun Aries में है, they should show these type of signs. They are very intelligent, promising entrepreneurs. Now, अगर आपका यही sun के ऊपर let's say Saturn है, then what will happen is वो delay करेगा ये. Right? अगर इसी पे Mars aspect कर रहे हैं, you're going to be ruthless industrialist, ruthless business leader. You're going to be cutthroat. So these are ways. What I am telling you is if the sun is exactly in the middle of the sign, assuming your ascendant is also in the middle, right? तो थोड़े बहुत characteristics तो आ जाते हैं. Now let's say sun is in the sign of Taurus. You person जो ऐसे होते हैं, they're very calm tempered. Action लेते हैं लेकिन थोड़ा slow लेते हैं. But they do take action. They are possessive people. Flexible नहीं होते इतने. They are tactful and they have originality in their brain. So think of people जो आप जानते हो, जो एकदम से cool होते हैं, जिन्हें गुस्सा नहीं आता, जो टाइम पे एक्शन लेते हैं जब लेना है तब. Procrastinators होते हैं, but they do their work very well, right? Sun in Gemini, alert, very polite. Gemini is a speaking sign. Mercury का sign है. They are scholarly people. They write books. They write poems. They write stories. They have good gift of knowledge. But इनका क्या होता है, थोड़े से shy होते हैं. And they are not cheats. They are very creative people. Cancer, which is owned by moon. अगर sun यहाँ चले जाता है, you become very emotional. जरा सी बात कह दो, they get touchy. They can snap back at you because they get very sad. इन्हें traveling अच्छा लगता है, independent है, possessive ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग. So sun in Cancer does that. Finally, Leo, which happens to be the sun's own sign, dignified, dominant, creative, famous, passionate, snobbish, haughty, generous. See, Aries और Leo में फर्क होता है. Leo is sun's own sign. जब sun Leo में आता है, he is more comfortable than Aries. Aries में exalt हो जाता है. Exalt means जब दशा आती है, he'll give the best results. जब दशा नहीं आती, he is just average. But जब Leo में आता है, he is permanently going to give you the best results. Best dasha. Okay. Virgo is again owned by Mercury. So now, हमने पहले भी कहा था Gemini का. Virgo, he'll be practical, but self-critical. अगर किताब लिख रहे हैं तो version 1, version 2, version 3 लिखते जाते हैं. These people believe they lack self-worth. They don't believe they are good enough in their life. But they have good memory. Critical लोग होते हैं. Sun should almost never be placed in Libra. अगर Sun Libra में 7 degrees or 13 degrees में आता है, it is well known the person will never have enough money. In fact, person will lose accumulated wealth and will die a pauper. So specifically 7 and 13 or between 7 and 13? Sun is debilitated at 10 degrees in Libra. उसके 3 डिग्री यहाँ और 3 डिग्री यहाँ पे असर रहता है. Okay. So, Sun should not be in Libra. But अगर Sun Libra में आ जाता है, what happens? The person will lack confidence. They are not good at what they're arrogant. They don't listen to other people. किसी का रास्ता नहीं देखते, वो खुद करते हैं, mistakes करते हैं. Scorpio. If Sun is in Scorpio, which is owned by Mars, Scorpio is like a scorpion, ना? हमने कहा था.
जी अपना सिर डालते हैं मिट्टी में. These are secretive people. Jealous हो जाते हैं. Many surgeons you see, जो doctors जो surgery करते हैं, surgery skill is ruled by Sun in Scorpio. But बहुत ही ज्यादा emotional है. By far the most emotional people you will see are Sun in Scorpio. So much so that they're bipolar. 1 second they're happy, 1 second they're sad. Problem हो जाता है इससे. Sagittarius तो आचर होता है. What is an archer? Somebody who likes to astrology में कहते हैं जो आचर होते हैं, they leave their bow and arrow and goes very far. They love independence, they love freedom, right? They are well respected, they like to travel the world. That's what Sun in Sagittarius does. मैं general बात कर रहे हैं. जी Sun in Capricorn, very yes, शनि की sign आ जाती है. And Sun and Saturn, you know, is a hard working planet. yeah तो अगर Sun यहाँ आ गए, वो practical हो जाते हैं. They work slowly, they're prudent, they have a clean mind, they are obliging, they do everything. Because जब एक planet एक sign में आता है, he will exhibit his characteristics in the way the sign is supposed to make them do. तो sun जो strong है, अभी Capricorn, Saturn में काम वाले sign में आ गया, तो he's going to work hard. He's going to be industrious, he's going to have a clean mind. okay Saturn, Sun in Aquarius generally detached हो जाता है because now you're moving towards the Ketu sign, which is detachment. You're not very sociable. ये जो Sun Aquarius में आता है, like a Mother Teresa, you end up doing more stuff for other people than you do for yourself. okay इनको दूसरों के लिए करना है. hmm Sun in Pisces, in natural zodiac Pisces 12th house हो गया. Very religious, very spiritual, highly sensitive, imaginative, compassionate. These kind of people. देखिए जब हम देखते हैं when people come to us and say I have a court case, what should be the outcome? तो हम कहते हैं 6th house is enemies, 8th house is court case, 12th house is the result of the case. But in our mind we also see the sun, which tells us how good this person is. We also look at the placement of planets in the 12th house, because 12th house is the house of prison. oh देखिए अगर आपका 9th लॉर्ड जो लक का प्लैनेट है, ये 12th हाउस में चला जाता है, इट्स जनरली नॉट अ गुड थिंग ना. right दैट मींस यू मे बी डूइंग समथिंग रॉन्ग. ऊपर से इफ योर एनिमीज आर स्ट्रांग एंड 8th हाउस खराब है, यू माइट एंड अप इन प्रिजन. आई यूज द वर्ड माइट बिकॉज काफी कॉम्बिनेशंस होते हैं ना. hmm So these are things we have to study very carefully. Astrology again will not deny, astrology will give. Yes, it might deny you some things. अगर हम इस एज पे बोले कि I want to become a actor, a model, I can't. It's just not possible. It's a certain age, it's done. Time की बात है, common sense की भी बात होती है. But everything that you want, you desire, you can get if you work at it and your planets are aligned. वो चाहिए. absolutely वो हो गया ना, you can do very well, fantastically well in life. At the end of the day, what you want? Success, happiness, and contentment. ये तीन absolutely चीज हो, अच्छा होता है. Success is your hard work, right? Happiness is your state of mind. yes Contentment is making those around you feel happy and better, that you feel you've done something for them. So in right तीनों चीजों में it is all about you. absolutely and that's what the topic of discussion for last week and this week was, the sun, which is essentially you. So listeners, सुन रहे थे आप the Saket Bhatia Astrology Show, which you listen every Tuesday 4 to 5 p.m. on Radio Zindagi, and you get answers to all your questions. I would like to apologize to all the callers who are trying to call us right now. We are a little short of time. We are almost at the end of the hour. So you can definitely connect with Dr. Saket Bhatia after the show, 408 639 5300. Once again, Dr. Saket Bhatia ka number hai 408 639 5300, or you can contact through his website, saketbhatia.com. With that, we are, as I said, almost at the end of the hour. Would you like to wrap it up? I mean, yes, sun has different effects in different signs. मैं यहाँ पे शो पे आया था, I just had 2 pages written with me, you know. I thought 2 पेज भी आज हो जाए तो बहुत बड़ी बात है. जी We didn't get through even 2 pages. But sun is benefic for some times, some signs, but not a benefic in some signs.
not a benefit is questionable. आप बोलोगे ऐसे कैसे my soul is not benefit to me. देखिए, sun doesn't represent just your soul. It represents many more things also. It represents you, your personality, your father, your ego, your ability to work hard. अगर आपकी sign है Aries, Taurus, Leo, Scorpio, Sagittarius, Aquarius, then for all these signs, sun is considered to be a very, very good planet. Very good. Agar Gemini hai, then it is neutral. He's not good, he's not bad. If he's Cancer, he's not good, he's not bad. But if your sign is Virgo, Libra, Capricorn, or Pisces, then sun malefic ho jata hai. In these cases, sun can give bad results in health, bad results in terms of ego. He will give you the money, he will give you the fame, but he will make you egoistic. Because at the end of the day, you have to do good here. You are just a little pawn, little subject who has come on this earth to do their duty. And once you leave, you're going to come back again. Vedic, I don't remember if I discussed कि fifth house discusses your past life. Yeah. Ninth house. No. Fifth house is the karam जो आपने Children. अच्छे किए हैं. Children, right? Fifth is Children, children. intelligence, but planets And in the fifth past. house also denote karams, good deeds you got from your past life. Ninth Right. house will denote what you're going to do in this life और उसके कर्म करो. So if you don't have such good planets sitting in the ninth house, it doesn't mean आप बुरा काम करोगे. It just means you better do more good now because अगले जन्म में आपके लिए कुछ difficult लिखा है. So people who have a weak ninth house, negative, bad planets in ninth house, make the best of this astrology knowledge that you have now. So the future life is going to be better. That's what I tell all the astrologers. जब हम न्यूयॉर्क गए थे, I got a chance to sit with another prominent astrologer who also comes on Radio Zindagi. I had a very interesting discussion and I'm going to have a combined show with them. We discussed how astrology can change lives in this life and how it can make you a better person. और वही हमने बात करनी है. Wonderful. Yes, Okay. we will definitely do that. Looking forward to it. But before that, before I let you go, there is a quick question. One of the caller who was trying to call since long time, वो ये पूछना चाह रहे थे कि जो आपने अभी सनशाइन्स बताए हैं, तो वो मतलब हिंदी के हैं या इंग्लिश डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है? लाइक जो आपने अभी इफेक्ट. They are based on your ascendants. तो आपने अपना date of birth, time of birth लेके कुंडली बनानी है and it's only based on your ascendant, not on the moon sign जैसे हिंदुइज्म में होता है. So ascendant only, okay? Okay. Thank you so much for clarifying that. Thank you. Listeners, आप सुन रहे थे the Saket Bhatia Astrology Show. And if you are still trying to call us, you can directly call Dr. Bhatia 408-639-5300 पे. And we will love to take your call next week. Don't forget to call in, tune in. The Saket Bhatia Astrology Show. Till then, this is Vedika signing off. आप कहीं मत जाइए. RJ Swati is going to be here right now. You are listening to Radio Zindagi, KZDG 1550 AM, San Francisco, and the entire